अस्सलाम वालेकुम। BSN फोर्थ सेमेस्टर। आज हम पल्मोनरी टीबी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी इफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? तो राइट ऑप्शन है लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस इज caused by which bacterium? तो राइट ऑप्शन है बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Which of the following is not a common symptom of pulmonary tuberculosis? So right option है डी, नाजिया। नाट की बात हो रही है, इसमें परसिस्टेंट कफ होता है, नाइट स्वीट्स, फीवर होता है, लेकिन नाजिया नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट। सो राइट ऑप्शन है ए। Which test is commonly used to diagnose pulmonary tuberculosis? So right option है सी, मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। Which population group is at the highest risk of developing pulmonary tuberculosis? So right option है C, middle age adult. Which of the following is not a common complication of untreated pulmonary tuberculosis? So right option is C, bronchitis. Multi-drug resistant tuberculosis refer to TB strain that are resistant to 3 antibiotics. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से मुराद वो टीबी के जरासीम है जो कई अद्वियात के खिलाफ रेजिस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस? सो राइट ऑप्शन है एंटी फंगल मेडिकेशन। इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, डायरेक्टली अब्जॉर्ब थेरेपी करते हैं, आइसोलेशन प्रिकॉशन करते हैं, लेकिन एंटी फंगल मेडिकेशन नहीं देते। Pulmonary tuberculosis can lead to the formation of small rounded lesion in the lungs is called granulomas. Granulomas क्या है? फेफड़ों में छोटे छोटे लेजन बन जाते हैं जिसको हम ग्रेनुलोमास कहते हैं। Which of the following statement about latent tuberculosis infection is true? So right option है B. LTBI cannot be transmitted to others. ये क्यों ट्रांसमिट नहीं होता? क्योंकि इसमें नो एक्टिव बैक्टीरिया होता है, नो कफ होता है, नो स्पूटम प्रोडक्शन होता है, सो इसलिए ये ट्रांसमिट नहीं होता मजीद लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन? सो राइट ऑप्शन है बी, हेपाटोटॉक्सिसिटी। कुछ मेडिकेशन और केमिकल्स लीवर को डैमेज कर देते हैं। Which vaccination is used to prevent tuberculosis in some parts of the world? So right option है BCG vaccines, जो हम प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। Which of the following is not typical symptom of active pulmonary tuberculosis? So right option है C, fanless lymphadenopathy. Lymphadenopathy refer to the enlargement of the lymph node. Which type of healthcare worker is at the highest risk of occupational exposure to tuberculosis? So right option is nurses. Pulmonary tuberculosis is characterized by the presence of mycobacterium infection in the lung. Which of the following is not a risk factor for developing pulmonary tuberculosis? So right option is D, regular exercise. Because यहाँ not की बात हो रहा है तो रेगुलर एक्सरसाइज, ये HIV इन्फेक्शन से भी रिस्क है, डायबिटीज, मेलाइटिस, स्मोकिंग, ये सब रिस्क फैक्टर है। Which organization lead global efforts to combat tuberculosis? So right option है World Health Organization. Which of the following is not a typical location for extrapulmonary tuberculosis? So right option है liver. Extrapulmonary tuberculosis outside the lungs को extrapulmonary tuberculosis कहते हैं, और यहाँ नाट की बात हो रही है तो लीवर। Pulmonary tuberculosis can lead to which potentially life-threatening complication involving the pleural space? So right option है emphysema. लंग एब्सिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए लंग एब्सिस? लंग एब्सिस क्या है? An infectious process resulting in the formation of a cavity within the lung parenchyma. लंग एब्सिस फेफड़ों में होने वाला एक संगीन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पीप से भरी हुई कैविटी बन जाती है। Which of the following is the most common cause of lung abscess? So right option है B, Staphylococcus aureus.
Which of the following is not a risk factor for developing a lung abscess? So right option है regular exercise. यहाँ not की बात हो रही है तो COPD, smoking, recent lung surgery ये risk factor है लेकिन regular exercise नहीं है. Which imaging modality is typically used to diagnose a lung abscess? So right option है CT scan. Which of the following symptom is commonly associated with lung abscess? So right option है C. Cough with full smelling sputum. Full smelling क्यों होता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस मौजूद होते हैं. How is a lung abscess usually treated? So right option B. Antibiotics. इसके खिलाफ हम antibiotics देते हैं. Which of the following is a potential complication of a lung abscess? So right option है C. Sepsis. Sepsis life threatening condition जो इस वक्त पैदा होता है जब इम्यून सिस्टम हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अपने जिस्म के ही टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं. Which demographic group is most commonly affected by lung abscess? So right option है middle aged adult. तो right option है C. What is the usual appearance of a lung abscess on chest X-ray? So right option is C. Cavitary lesion with an air fluid level. Which of the following is not a common symptom of lung abscess? So right option है D. Peripheral neuropathy. यहाँ not की बात हो रही है तो इसमें फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है और हेमोप्टेसिस होता है लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होता. Which antibiotic is often used as empiric therapy for treating lung abscess? So right option is C. Clindamycin. What is the most common route of infection leading to lung abscess? So right option is B. Direct extension from adjacent structure. Which of the following condition is not commonly associated with the development of a lung abscess? So right option है pulmonary embolism. Pulmonary embolism, blood clot which block an artery in the lungs. यहाँ not की बात हो रही है तो right option है D. What is the hallmark symptom of a lung abscess? So right option is C. Productive cough. Which diagnostic test is used to confirm presence of anaerobic bacteria in a lung abscess? So right option is C. Bronchoscopy with bronchoalveolar lavage. Which of the following is a common complication of a large or untreated lung abscess? So right option is C. Emphysema. Emphysema क्या है? Accumulation of pus in pleural cavity. Which lung lobe is most commonly affected by lung abscess? So right option है right upper lobe. Which imaging findings suggest a complicated lung abscess with necrotizing pneumonia? So right option is D. Pleural effusion. Which of the following statement about lung abscess is true? So right option is C. Lung abscess often requires surgical drainage. What is the usual duration of antibiotic treatment for uncomplicated lung abscess? So right option है 14 days. अस्थमा को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं. What is asthma? A chronic inflammatory disease of the airway जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती है और डिफिकल्टी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है. Which of the following is not a common symptom of asthma? So right option है chest pain. Not की बात हो रही है तो यहाँ कपिंग भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, वीजिंग होता है तो चेस्ट पेन नहीं होता, ये लंग एब्सेस में होता है. So right option is C. What is the primary characteristic feature of asthma? So right option A. Inflammation of the bronchial tube. Which of the following trigger can exacerbate asthma symptoms? So right option A. Cold air. जब सर्द हवा में सांस लिया जाता है तो ये हवा नालियों को तंग कर देती है जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है. What medication is commonly used as a rescue inhaler for acute asthma attacks? So right option is C. Short-acting beta agonist. Which of the following is a common long-term controller medication for asthma? So right option है Montelukast जो मोंटिका मोंटेगिट के नाम से मार्केट में मौजूद है. What is the term for the sudden worsening of asthma symptom after triggered by exposure to allergen or irritants? So right option है B. Asthma exacerbation या अस्थमा अटैक जो अस्थमा अटैक में अचानक इजाफा होता है. Which of the following is not risk factor for developing asthma? So right option है regular physical activity. ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, एक्सपोजर टू टोबैको और
और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एलर्जन या इरिटेंट से भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ नाट की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। व्हाट इज द रोल ऑफ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड इन अस्थमा मैनेजमेंट? तो राइट ऑप्शन है बी, दे रिड्यूस एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट सिम्टम। ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और प्रिवेंट सिम्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एनवायरमेंटल ट्रिगर फॉर अस्थमा? सो राइट ऑप्शन है फिट टेंडर्स। ये टेंडर कबूतर में होता है। What is the recommended action for someone experienced an asthma attack? So right option है use a rescue inhaler as prescribed. Which of the following is a characteristic feature of asthma related cough? So right option है C, cough that worsen at night or early morning. Which what is the role of allergen in triggering asthma symptoms? So right option is C, they stimulate an allergic response leading. Which of the following is a common side effect of long-term use of oral corticosteroid for asthma? So right option A, weight gain. What is the role of peak flow meter in asthma management? So right option A, B, they monitor lung function and help assess asthma control. Which of the following is a characteristic feature of exercise-induced asthma? So right option is C, symptom typically occur during or after exercise. What is the primary goal of asthma treatment? To control symptom and prevent exacerbation. So right option A, B. Which of the following is not pharmacological intervention for managing asthma? So right option A, allergen avoidance. जिस चीज से एलर्जी होती है उससे दूर रहना। What is the term for asthma symptom that persist despite treatment with standard medication? So right option A, respiratory asthma. ये अस्थमा की एक किस्म है जो ज्यादातर दवाई इस्तेमाल करने से कम नहीं हो जाती। Which of the following condition is characterized by chronic inflammation of the airway similar to asthma but is not reversible? So right option है chronic obstructive pulmonary disease, ये इरिवर्सिबल है। COPD chronic obstructive pulmonary disease को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज COPD? COPD क्या है? A chronic inflammatory lung disease. What are the primary risk factors for developing COPD? So right option is C, smoking and environmental pollutant. Which of the following is not a characteristic feature of COPD? So right option is D, alveolar hemorrhage. इसमें airway inflammation होता है, bronchospasm, excessive mucus production. So not की बात है, तो यहाँ ऑप्शन है D. Which of the following is a common symptom of COPD? So right option is all of the above. Cupping of blood, productive cup with full smelling sputum, wheezing. So right answer is all of the above. What is the most common cause of COPD? So right option is C, smoking tobacco. Which of the following diagnostic test is used to confirm the diagnosis of COPD? So right option is B, spirometry. What is the primary treatment goal for parents with COPD? So right option is B, control symptom and improve quality of life. Which of the following medication is commonly used as long-term bronchodilator in COPD management? So right option is D. What is the term for the sudden worsening of COPD symptom often triggered by respiratory infection and environmental factors? So right option is A, COPD exacerbation. Which of the following is not a common complication of COPD? So right option is smoke. Not की बात हो रही है तो यहाँ ऑप्शन है डी, इसमें नमूनिया, पल्मोनी बॉयजम और कॉर पल्मोनली हो सकते हैं। Which of the following lifestyle modification is recommended for COPD management? So right option is smoking cessation. अगर सिगरेट नोशी को नहीं छोड़ा गया तो फेफड़ों को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। What is the term for the progressive decline in lung function observed in patient with COPD? So right option is C, airway remodeling. Which of the following is a surgical treatment option for severe COPD? So right option is A, lung transplant. What is the characteristic feature of COPD on chest X-ray? So right option is B, hyperinflated lungs with latent diaphragm. COPD की वजह से फेफड़ों में हवा फंस जाती है, इसकी वजह से फेफड़े मामूल से ज्यादा फूल जाते हैं, जिसको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स कहते हैं। और प्लेटेंट डायफ्राम, आमतौर पर डायफ्राम डोम शेप होता है, लेकिन जब लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाता है तो वो डायफ्राम को प्रेस कर देता है, जिसको हम प्लेटेंट डायफ्राम कहते हैं।
याद रखिए डायफ्राम सांस लेने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। Which of the following is a common symptom of COPD exacerbation? So right option is C, increased sputum production. Which of the following condition is a common comorbidity associated with COPD? So right option है hypertension. कोमोर्बिडिटी का क्या मतलब है कि एक मरीज में एक से ज्यादा बीमारियां हैं और सीओपीडी में हाई ब्लड प्रेशर का होना बहुत आम है। Which of the following intervention is aimed at preventing exacerbation in COPD patients? So right option is C, pneumococcal influenza vaccination. Which of the following statement about COPD is true? So right option is D. COPD is characterized by a persistent limitation of airflow. Which medication is commonly used for COPD exacerbation management and the emergency department? So right option है A, oral corticosteroids. इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।